If you are an artist और अगर आपका Instagram पे art account है तो this video is for you. I'm getting so many DMs on Instagram asking followers कैसे बढ़ाए. Well, the easiest way is to buy followers. And as we know, the easiest way is not always the right way. Buying followers can harm your account. ये सब मोस्टली फेक अकाउंट्स होते हैं जो आपको एंगेजमेंट नहीं दे सकते और Instagram इज प्रेटी मच एबल टू डिटेक्ट दैट इफ़ यू हैव फेक फॉलोअर्स और रियल वंस. तो राइट वे क्या है, सही तरीका क्या है? Instagram की ग्रोथ किसी एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं होती है. सो सारी बातें हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकेंगे एंड आई विल बी क्रिएटिंग अ सीरीज ऑन दिस टॉपिक दैट विल कवर each and every aspect of Instagram. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तो अगर चैनल पे आप नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना. इसके बाद जो भी वैल्यूएबल वीडियोस में यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे. By the way, my name is Saajan, also known as Busy Pencil on social media platforms, a traditional artist turned digital artist specialized in portrait paintings, caricatures and cartoons. In this video, we'll talk about an important but most ignored part of Instagram, and that is bio. सबसे पहले बात करेंगे why the bio is so important, so that you will get an idea if you want to stick around or skip the video. 3 रीजंस देखेंगे. पहला रीजन है फर्स्ट इंप्रेशन. कोई भी विजिटर आपके प्रोफाइल पे या आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आता है तो सबसे पहले उनकी नज़र आपकी बायो पे जाती है. अ गुड बायो क्विकली शोज व्हाट काइंड ऑफ आर्ट यू क्रिएट एंड व्हाट यू वांट टू शेयर. सेकेंड रीजन इज आइडेंटिटी. Your bio is an opportunity to establish your identity as an artist and communicate who you are and what you do to your audience. It allows you to showcase your unique perspective and differentiate yourself from other artists in your niche. Third is searchability. By including relevant keywords in your bio, you can make your profile more searchable and increase the chances of being discovered by potential followers and clients who are interested in your niche or your products or services. But अब एक आइडियल बायो किस तरह से होना चाहिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और अब हम उस पे बात करेंगे. तो शुरू करें. गाना बजाओ. एज एन आर्टिस्ट कुछ लिमिटेड लाइंस में खुद को इंट्रोड्यूस करना कुड बी अ डिफिकल्ट टास्क. अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना. We'll see 4 points on how to craft a perfect bio. To start with the same, answer these simple questions. First question is, what kind of artist are you? This question will define your niche. आप watercolor artist हो या landscape painter, storyboard artist, digital artist, comic artist, whatever it is, mention that in your bio. Second question is, what products or services do you offer? अगर आप commission work accept करते हो तो you should mention that in your bio or anything that you offer as a service. और अगर आपके कुछ art products हो तो you can mention that as well. Try to focus on 2 or maximum 3 things. ऐसा नहीं है कि सब डाल दिया बायो में, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, कार्टून, लोगो, ब्रोशर डिज़ाइन. ना, ऐसा नहीं करना है. अगर आप सबके पीछे भागोगे तो भाई एक भी नहीं मिलेगी. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर कैन पीपल बाय योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. आपकी खुद की वेबसाइट हो जहाँ पे आर्ट प्रिंट्स, कैलेंडर जैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो तो यू शुड मेंशन दैट इन योर बायो. साथ ही वेयर आर यू बेस्ड और लोकेटेड. ये ह्यूमन साइकोलॉजी हो सकती है कि लोग अपने आसपास के एरिया के लोगों से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं और ऐसे बिजनेस के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं. So for example, if you are from Indore and you offer character designing for children books, तो इंदौर बेस्ड कोई पब्लिकेशन हाउस है अगर जो ऐसे इलस्ट्रेटर की सर्च में है तो दे विल प्रेफर वर्किंग विथ यू रादर दैन समवन फ्रॉम मुंबई और दिल्ली. डिस्क्लेमर, काम अच्छा होना चाहिए भाई, ऐसे सिर्फ लोकेशन बेस पे नहीं चलेगा. आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट लाइन. व्हेन पीपल लुक एट योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, the first line of your bio is usually the first thing that they see. Say what kind of
art you create and what makes you special. This way people will quickly understand what you are all about. For example, जैसे पहले भी मैंने कहा है, it may be a landscape painter, abstract artist, illustrator, designer, watercolor artist, anything. Mention that in your first line. When listing multiple occupations or interests, it is important to separate them in a clear and organized manner. This helps to ensure that the information is easy to read and understand. One way to do is to use symbols such as a bar or a dot to separate the items in your list. For instance, you could list them like this: digital art, bar, graphic designing. This method is also easy to understand and visually appealing. The next point is connect. The second line of your Instagram bio is a powerful tool that allows you to share more about yourself and create a deeper connection with your followers. आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे आपका ऑक्यूपेशन, इंटरेस्ट, हॉबी etc. It is also a great idea to include a quote or a phrase that best describes you or that you live by. This could be a line from your favorite song, a famous quote, or something you came up with yourself, like your own quote. अगला पॉइंट है कॉल टू एक्शन. A call to action is simply a request or invitation to take a specific action जो आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प कर सकता है. कॉल टू एक्शन में आप फॉलो करने के लिए भी बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो. You can also make use of Instagram's ability to include one external link in your profile. इस लिंक को आप यूज करके you can direct your followers to your website, online store, or any other platform that you wish to promote. The last line of your bio is the perfect place to let your followers know what the link is for and what action you would like them to take. To make your call to action even more effective, you can use emojis or arrows pointing downward to draw attention to your external link. This can help make your call to action more eye-catching and encourage your followers to take the desired action. So make sure to give your last line of the bio attention it deserves and use it to your advantage. अब बात करेंगे बोनस टिप के बारे में. जब आप बायो लिख रहे हो तब ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि वर्ड लिमिट इज़ 150 कैरेक्टर्स ओनली. ओवर क्राउडेड बायो रीड करने में बहुत ही बोरिंग और डिफ़िकल्ट हो सकता है and it can turn off potential followers. So the bonus tip is use emojis. Without emojis आपका अकाउंट थोड़ा बोरिंग टाइप्स लग सकता है, but with the addition of emojis you can add a touch of fun and uniqueness that sets your profile apart. Emojis चूज करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आपकी पर्सनालिटी या आपके अकाउंट का टोन किस तरह से सेट करना है और उस टोन या पर्सनालिटी के साथ अलाइन हो सके ऐसे इमोजीज आपको यूज़ करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट योर प्रोफाइल टू कन्वे अ प्लेफुल एंड लाइट हार्टेड टोन, यू माइट यूज़ इमोजीज लाइक स्माइली और हार्ट्स. बट इफ़ यू वॉन्ट योर प्रोफाइल टू कन्वे अ मोर सीरियस टोन, you might use emojis like pencil or a book, right? So don't afraid to get creative and use emojis to bring your profile to life. On Instagram, you are only allowed to include one external link in your bio. This means that if you have multiple places you want to direct your followers to, such as an online shop, a website, or another social platform, you will need to find a jugaad. And the jugaad is the link tree, which is a free landing page that allows you to include multiple links in one place, whether it is your online shop, website, YouTube channel, or another social media platform. This makes it convenient for your followers to access all of your online presence in one place. ये वाला जुगाड़ आपकी ओवरऑल सोशल या ऑनलाइन प्रेजेंस को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है. आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में कौन से इमोजीज यूज़ कर रहे हो, या अगर नहीं कर रहे हो तो कौन से इमोजीज आप यूज़ करना चाहोगे, ये आप कमेंट्स में बताना. Let us see how many creative people are here watching this video. Well, if you found this video helpful, please don't forget to hit a like button
and share it with your friends and colleagues. And don't forget to subscribe to the channel for more great content like this. Your support helps me keep creating more videos and resources to help artists like you succeed on Instagram. Thank you for watching. Bye.